हेलो एंड वेलकम टू द स्पोर्ट्स लैब। मेरा नाम है सौरभ, मेरे साथ अंकित भाई हैं एज ऑलवेज। और हमारे साथ जो आज नए मेहमान आए गुजरात टाइटन के सुपर फैन अभिनव भैया। और कुछ Hi everyone. वो बताएंगे हमें जो हमें नहीं पता है, और कुछ इंटरनल मामलात जो जीटी अभी सुर्खियों में है। पिछले कुछ दिनों से जब भी मैं ट्विटर खोलता हूं तो ट्रेंडिंग में रहता है कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या का नाम हो, चाहे शुभमन गिल का नाम हो। तो सारे मुद्दों पे बातें होंगी। तो सबसे पहले हाय अभिनव भैया, हाउ आर यू? I'm doing great. Thank you so much. थैंक्स भैया जी फॉर ज्वाइनिंग। मतलब आज स्पोर्ट्स लैब पे सौरभ सबसे एक्सपीरियंस बंदे आए हैं, क्योंकि इतना तगड़ा मसला जीटी का चल रहा है। द ऑल द नॉइस जो आ रहा है वो जीटी का यार है। तो अभिनव भैया इज द बेस्ट मैन टू क्या वो क्या सोचते हैं मतलब अभिनव भैया से बेटर कौन बता सकता है हमें आज। एग्जैक्टली। Yeah, I wish I knew as much as Hardik Pandya himself does, but yes, we can probably have an intelligent take on this. या तो चलिए शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। जब जीटी का फर्स्ट सीजन था तो बहुत Mm-hmm. कम लोगों को उम्मीद थी, सारे लोग ऐसी बात कर रहे थे कि यार ये क्या टीम बनाई है। मतलब आशीष नेहरा कोच हैं और ऐसी टीम मतलब सब यही बोल रहे थे कि यार रिजर्व्ड कर लो 9th या 10th नंबर इनके लिए, क्योंकि इस टीम में कुछ भी नहीं है अपार्ट फ्रॉम हार्दिक पांड्या एंड राशिद खान। तो अ, बिल्कुल नीचे ये टीम रहने वाली है। पर सरप्राइज किया, सबको सरप्राइज किया। अ, अगर मैं भी यहाँ बैठ के ऐसा बोलता उस समय तो मैं भी यही बोलता कि यार नीचे की टीम रहेगी, टॉप 4 में आना बहुत मुश्किल है। तो 4 में तो क्या आपने टाइटल उठाया उस साल। तो हाउ वाज दैट? और आपको भी कहीं ना कहीं सरप्राइज किया होगा। Yeah, obviously, कि मतलब the fact that we won it was a big surprise. Uh, मुझे ये डाउट्स नहीं था कि टीम मतलब मुझे ये कभी नहीं लगा था कि टीम एकदम नीचे फिनिश करेगी simply because at least some parts were doing all right. मतलब some parts we were a good team in terms of the talent that we हम्म, have brought together. एंड हम सबके पास में क्रिकेट में एक बहुत ग्लोइंग एग्जांपल था, राजस्थान रॉयल्स, द फर्स्ट बैच, राइट? जी यस, जी। आई और आई बोलिए आई नो। और तारीफ कीजिए थोड़ी। नहीं नहीं, बिल्कुल यार, जब तक जहाँ पे क्रेडिट ड्यू वहाँ देना भी चाहिए। तो राजस्थान रॉयल्स वाज अ ग्लोइंग एग्जांपल ऑफ हाउ अ टीम मैनेज टू गेट जस्ट द राइट पीपल इनटू इनटू मोशन। एंड थोड़ा बहुत जितना ज़्यादा लोग क्रिकेट खेलते हैं उतना ज़्यादा उन्हें समझ में भी आता है कि a team is not supposed to be all superstars, and it needs the good team players to actually come in and start moving like a proper well-oiled machinery. तो ट्रू। एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि नेहरा जी एंड हार्दिक पांड्या विल बी एटलीस्ट एबल टू गेट द टीम गोइंग इन सच अ वे कि हम कहीं ना कहीं टॉप 4 में तो फिनिश करें। मतलब दैट्स आइडियली व्हाट यू वुड वांट, राइट? टॉप 4 के बाद में तो ठीक है, इट हम्म, डिपेंड्स ऑन द डे। तो एक्सपेक्टेशन with it, and they came truly guns blazing, and actually they ended up winning the title. बट जो मैचेस हम देखते थे उसमें हमें वही दिखते थे, सबके रोल्स बहुत क्लियर थे, सब अच्छे से अपने रोल को परफॉर्म कर रहे थे। ऑब्वियसली यू हैव अ स्टार लाइक अ शुभमन गिल, यू हैड अ स्टार लाइक अ राशिद खान, जो कि yeah, सिर्फ रोल की बात नहीं, दे कैन एक्चुअली विन मैचेस ऑन देयर ओन। सम गेम्स यू हैड डेविड मिलर। तो a mix of stars and on people who are doing their jobs well is the ideal combination, I think. So that clicked for us in the first सो season. Almost got us the second title also. Uh, yeah. so Yeah. So yes. Abhinav, yeah, I just wanted to understand what do you think is the role of a person like Vikram Solanki? He's the director of the Gujarat Titans. I think he has played for England also. How do you see Hmm. his role growing? And I have heard that he's a very good man manager. So just insight on that also. Yeah. So see, I think he's what, a sports director, right? Sorry, the team Correct. director, right? Yeah. So see, the titles aside, all these people who have typically played the sport at the highest level, not necessarily really been stars in their own teams. Okay. Right. इनको Yeah. इनके साथ ये जरूर है कि दे हैव अ वेरी वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, Exactly. करेक्ट? In terms of not only talent, in terms of team dynamics and man management. A very good example is something, let's say the coach of Indian team also. I've been a very very strong believer that the coach of Indian team may not be a very technically sound person, but he has to be a very good man manager, because you're actually managing some of the biggest egos in the sport, Right. Yeah. right? Absolutely. You have to, and ego बोलना थोड़ा गलत होगा at times, you have to just make sure that you're giving each person their own space to be able Right. to express themselves off the field, in the field, and ठीक है, they'll all have their own way of working. तो मैन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विक्रम सोलंकी, ऑब्वियसली ये मैन मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास आशीष नेहरा जी भी हैं। आई एम श्योर Yeah. विक्रम सोलंकी
plays a very important role. But yes, टीम स्ट्रैटेजी में किस तरह से टीम का स्ट्रक्चर होना चाहिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ टैलेंट डू वी नीड, व्हाट सॉर्ट ऑफ बेसिस वी नीड टू कवर, आई थिंक विक्रम सोलंकी and then Ashish Nehra would make for a very good team in that. So True. even though Vikram Solanki was not a standout England player, but if Yeah, he plays not at that level, you would clearly know that he understands yeah. True. things And around. एट द मैनेजमेंट ऑफ जीटी आल्सो आप देखते हैं कि सीबीसी कैपिटल्स उनको ऑन करती है, और बहुत ज़्यादा एक ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है, तो विक्रम सोलंकी भी कहीं ना कहीं वहाँ से आते हैं। और मेरा अगला सवाल उसी के ऊपर था कि आशीष नेहरा का आपने जो नाम लिया, आशीष नेहरा प्लस हार्दिक पांड्या, वो एक कॉम्बिनेशन सेट था, तो 2 साल लगातार आपको फाइनल में पहुंचाया। अ, वो कॉम्बिनेशन ब्रेक होने से मतलब अब चीज़ों पे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा लगता है। I would not hope so. मतलब मैं चाहता तो नहीं हूँ, ठीक है. It's very difficult to predict something like that. जीटी के सक्सेसफुल होने के पीछे हार्दिक पांड्या, the cricketer, okay, a person who can bat and bowl. As a bowler, he could walk into the Indian team. As a lower middle order batsman, also he could हम्म, probably hold his place in the Indian team. You had a talent of that sort, and हार्दिक पांड्या द लीडर तो फिर अलग ही एंगल आ जाता है. बट यू मतलब एक बंदा वैसा जिसको रिप्लेस करने के लिए भी आज की डेट में लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन गोइंग फॉरवर्ड अपने यहाँ पे भी ये होगा कि हार्दिक पांड्या जैसे वो कैसे रिप्लेस किया जाए. तो वो दैट्स अ बिग ट्रू। gap to fill as a player. Secondly, Hardik Pandya, the personality, the guy who ended up becoming the captain of GT and getting them across the line, वो कॉन्फिडेंस या ईयर वन के बाद में तो डेफिनेटली उसमें स्काई हाई था. ही न्यू कि यू नो, एंड यू कुड मेक दैट आउट कि दिस इज अ गाय हु न्यू व्हाट डिसीजंस टू टेक. एक ऐसा कॉन्फिडेंट कैप्टन जब नेहरा जी के साथ में होता है तो आई एम श्योर इट क्रिएट्स अ बिग इम्पैक्ट. यू नॉट Right. टॉकिंग टू समवन हुज हार्बरिंग डाउट कि यार ये काम करेगा नहीं करेगा. जिसने किया है वो उसे या पता होता है कि देयर आर चांसेस ऑफ सक्सेस आर हाई. तो उस कॉम्बिनेशन को रेप्लिकेट करना मतलब आई वुडंट से कि इम्पॉसिबल है, बट येस वील हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो अगेन. शुभमन गिल द कैप्टन, हम लोगों ने ज़्यादा देखा नहीं उसे एज अ कैप्टन, सो बहुत मुश्किल होगा अभी उस पर कॉमेंट करना कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा. इंडिया में येस द ट्रेडिशन हैज़ बीन टिपिकली कि योर बेस्ट प्लेयर एंड्स अप बिकमिंग द कैप्टन. Yeah, right. या That's not the best way to go about things. We've seen enough field examples around this, but I would not let that become a hurdle in at least In the letting winning cause. Shubman Gill do his job properly. तो if he's, I'm sure मतलब I think लोगों ने कुछ तो देखा होगा शुभमन गिल में that they wanted to take a punt on him. There must have या been some cricketing knowledge, some cricketing maturity that he must have shown as a part of GT over the last 2 years and as an Indian cricketer to take this punt. आपके पास में केन विलियमसन थे, आपके पास में राशिद खान भी थे, कैप्टन बनाने वाले दोनों मटेरियल है. केन विलियमसन obviously there's no doubt about it, but they still chose to go with Shubman Gill. One because I think Indian talent है, he must have shown that level of maturity, and दूसरी मेरे ख्याल से it's more to do with team combination. You're going to be playing with 4 overseas guys, and जिस तरह से अपनी टीम के पास अभी players हैं, uh, it might come to a situation जहाँ पे हो सकता है you might have to drop a Kane Williamson, not because Right. he's a bad player, but just because you have to manage that balance also. So logically, it is right to be an Indian player to be a Have an captain of. Indian player as a captain, and why not if it's a Shubman Gill who's probably in the form of his life. तो ट्रू। उस एंगल से तो तो खराब नहीं है. Only time will tell कि how good and smart a captain he is. अभिनव भैया, अभी एक सवाल जो मतलब द थिंग्स हैव अनफोल्डेड, जो भी हुआ है हार्दिक पांड्या सिनारियो, जो मतलब सौरभ आपको अभी पूरी तरीके से कचोड़ के पूछने वाले हैं, अंदर से बिल्कुल वेट कर रहे हैं उस सवाल का. वो सौरभ यू गो थ्रू कि मैं सिर्फ तो इतना बोलूंगा कि पूरा सिनारियो क्या आप बताओ कि ये क्या रहा है, बट सौरभ पूरा सवाल जो तुमने भर रखा है वो निकालो पहले. द बिग क्वेश्चन, मतलब हर कोई जिसकी बात कर रहा है, जो भी सोशल मीडिया हम खोलते हैं, ट्विटर से लेके हर कहीं पे एक ही सवाल है। अ, हार्दिक पांड्या का सवाल, लॉयल्टी के ऊपर काफ़ी बातें हो रही है, पैसों के ऊपर काफ़ी बातें हो रही है, तो क्या आप कैसे देखते हैं, मतलब अब क्या वही फैक्टर था, एक मनी फैक्टर बड़ा होता है प्लेयर के लिए, या अगेन एक लॉयल्टी फैक्टर जो 2 साल से बनाया है, 2 साल अगेन फाइनल खेले हैं, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, और एक बॉन्ड जो बना हुआ था टीम के साथ, उसको तोड़ के क्या मनी इतना बड़ा फैक्टर हो जाता है कभी कभी?
Just to add on, Abhinav, yeah, just to add on what I want to know your perspective as a franchise follower, as a Hardik Pandya follower. You have always lobbied. 2 साल से आप बहुत lobbying भी कर रहे हो हार्दिक पांड्या के. He came with no baggage. Remember, he came from an injury. He became the captain and he did what he did the best. We didn't expected हार्दिक पांड्या कि वो फाइनल भी खिला देंगे या वो फिट भी होंगे. सेकंड हम्म. सीजन में थोड़ा सा उनका परफॉर्मेंस फिर भी कम रहा, बट आई वांट टू नो योर डीप पर्सपेक्टिव कि भैया एज अ फैन ऑफ गुजरात टाइटंस आपको क्या लगता है ये ठीक हुआ, और जिस तरीके से अनफोल्ड हुआ है ये मुंबई इंडियंस को, मुझे वो चीज जाननी है आपसे. एंड अगर आप आगे हार्दिक पांड्या को किस तरीके से सपोर्ट करोगे वो भी मुझे जानना है. जस्ट टू एड ऑन व्हाट सौरभ हैज आस्क्ड. अंडरस्टूड. यार देखो, मैं दोनों तीनों एंगल से मैं देखना चाहता हूँ. ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अपने आप को सिर्फ एक फैन की तरह सोचना. शायद इसीलिए बिकॉज हर चीज़ को ना थोड़ा लॉजिकली देखने की हैबिट बन गई है. बट ऑब्वियसली बिट ऑफ इमोशन ऑलवेज कम्स इनटू द पिक्चर व्हेन यू ऐड द टाइप ऑफ अ फैन स्पेसिफिक टीम का. Logically speaking, I don't know if Hardik's movement makes any sense for Hardik the player. I'll keep the money angle aside because the moment you bring in money and I don't know how much he's making, right? अगर ये एक ऐसी बात होती कि यार 4 करोड़ मिल रहे एक प्लेयर को और सडनली सामने वाले ने 10 करोड़ ऑफर कर दिए, ठीक है, इट्स अ ह्यूज जंप. If it's going to be in the same range as let's say 15 that GT was paying, that's the number you hear, 15 CR है. But Mumbai it will is have. the news is there is a cash transaction also which has taken place. Correct. No, That's the no, transfer no. fee. That's Yeah, the transfer transfer fee. And interestingly, the transfer fee will does be not some does part not will be even. given to Hardik also. Yes, and so there are. I think इसमें दो चीज होती है. एक तो जो एक तो प्लेयर को मतलब ट्रेडिंग वैल्यू जो है विच इज बेसिकली द वैल्यू एट विच जीटी इज बेसिकली सेलिंग हार्दिक पांड्या टू एमआई. And Yeah. the transfer fee element is something that is on top. That's something that the player gets to keep. It does not eat into your purse also, and that's a very surprising thing, frankly Yeah, speaking. ये जो कंपोनेंट है ये बहुत हो ही है. सकता है हो सकता है बहुत बहुत बड़ा हो, बट इतना सेंस लगेगा नहीं. इट वुडंट मेक लॉट ऑफ फाइनेंशियल सेंस फॉर अ मुंबई टू start doing those things, because if the moment you start making those changes for one Hardik Pandya, don't forget Mumbai is sitting with so many stars in their this thing. You Rohit True. Sharma के अलावा you have a Surya Kumar Yadav, you have a Nishan Kishan, and बुमराह. ये भी कोई छोटे प्लेयर्स नहीं है. करेक्ट, बुमराह, True. करेक्ट, ये कोई छोटे प्लेयर्स नहीं है. इफ दिस इज समथिंग दैट मुंबई इज ट्राइंग टू पुल ऑफ, डोंट बी सरप्राइज इन तीनों को अगर अगले साल फ्रेंचाइजेस इस टाइप की चीजें करने लग जाती है. Hmm. तो उसमें मतलब आई डोंट नो इफ money was such a big factor, but yes, the moment you start looking at the logic, Hardik's movement made little sense for Hardik the player, Hardik the captain. Why did he want to go back to Mumbai unless he was really assured of captaincy, if not this year, probably the next year. Yeah. कैप्टेंसी तो वो यहाँ भी कर रहे थे. एंड मतलब एक बोलना चाहिए ना कि कॉन्स्पिरेसी थियरी के एंगल से सोचो तो इफ शुभमन गिल्स कैप्टेंसी क्या बोलना चाहिए captaincy desires did not become a bone of contention in GT. I don't know if they are, but let's say it's the only other possible, so-called the Hmm. star in the setup who wants to be the captain. अगर और वही एक EMI एंगल था wanted so badly. That can be a reason also. यार. हाँ, तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एमआई मैनेजमेंट इतनी बैडली इनकी इतना जरूरत क्या इतना क्या पड़नी हो है. गया. हाँ. हाँ, मतलब अगर रोहित शर्मा ने सपोज पहले ही बोलते कि भाई मेरा तो वर्ल्ड कप फाइनल था, खत्म हो गया, अब नहीं कर रहा, वो तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी सच न्यूज, एंड इट वुड बी स्टूपिड ऑन हिज पार्ट टू आल्सो गिव इट अप. Now is the time for him to actually use that dose of confidence that he's managed to get through. But now I have always seen Rohit Sharma, the good captain, give up his wicket across the board just because someone here else, or KL Rahul on the other end is not able to score. This was the Right. first time that Rohit Sharma actually got his cards right. He played Yeah. like Rohit Sharma was expecting. That confidence should be carried into a T20, an IPL tournament. तो दैट इज डेफिनेटली एन इम्पोर्टेंट थिंग. इतनी क्या डेस्परेशन थी समझ में नहीं आ रहा मुझे सीरियसली. आई थिंक द ओनली रीजन इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अ बिग ऑक्शन नेक्स्ट ईयर, राइट? सो Right. दैट्स वेयर आई थिंक मुंबई माइट थिंक यार हार्दिक पांड्या हमें चाहिए तो सही, व्हाई नॉट जस्ट गेटिंग हिम इन एंड होल्ड ऑन टू हिम.
because the last time when they had to release Hardik Pandya was because there was a cloud of injury on Hardik, Right. and they had to make their strong the very difficult choice of retaining the guys like a Surya Kumar, Rohit, and Ishan Kishan. ईशान किशन था क्या बुमराह सॉरी तो मैंने इन लोगों ने इन्हें रिटेन किया हार्दिक को दे हैड टू लेट गो बिकॉज द क्लाउड ऑफ इंजरी अगर if the cloud of injury is not there they would definitely want to hold on to Hardik or have the option of holding on to a Hardik for the Or maybe Hardik has told that I will not play any ODI and Test match cricket now. ओडीआई एंड टेस्ट मैच क्रिकेट देखो टेस्ट मैच तो वो वैसे भी नहीं खेल रहा था ODI भी नहीं खेलेगा. और ओडीआई की लाइफ तो यार वैसे ही लिमिटेड है Right. कंसिडरिंग द फैक्ट कि इट वाज ओनली वर्ल्ड कप्स व्हिच एक्चुअली ब्रॉट दिस इनटू पिक्चर तो क्वाइट पॉसिबल है कि ओडीआईज Scrap भी हो विल जाए. हाँ मतलब हो तो जाएंगे अनलेस देयर इज अ रियली स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट जस्ट द वर्ल्ड कप के बेसिस पे आईसीसी में ड्रैग इट फॉर सम मोर टाइम एंड गेट द एडिशनल रेवेन्यूज बिकॉज आईसीसी जनरली सेल्स दीज थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट्स सो इफ दे आर सेलिंग Yeah. लेट्स से द नेक्स्ट 6 years cycle to a broadcaster it has to be number of events global events आप कितने करा रहे हो 6 साल Okay. का अगर आप बेचो लेकिन उसमें सिर्फ 2 ग्लोबल इवेंट है तो वैल्यू कम मिलती है अगर 4 ग्लोबल इवेंट है तो आपको वैल्यू ज़्यादा मिलती है that's the way ICC will try to has been trying to monetize this. So ODI World Cup खींचने की कोशिश तो की जाएगी unless someday the broadcaster says कि boss it doesn't make any sense. Okay. Think of something else. So that's one of the reasons why I think this could be a problem. Right. Is my audio clear? Do you hear any background noise? I hope not. No, it's clear. It's clear. Okay, Very okay, clear. okay. So, हाँ, Hardik का movement as a player, as the captain Hardik, I don't find a lot of logic per se in that. Yeah, and Saying that this Hardik, yeah, and this whole scenario puts Hardik Pandya, the next Indian T20 captain, uh, in a dark light. Like no, किसी ने मतलब सोचा नहीं होगा कि हार्दिक पांड्या इतना प्रोमिनेंट नाम इंडियन टीम का और जैसा आप पिछले 5-6 मिनट से बता रहे हैं पूरा सिनेरियो कैसे हुआ तो nobody has expected this. no one. And बहुत confusion था. what you were also तब hearing, right? When this entire rumor was rife that Hardik Pandya is moving away was just मतलब आप यही सुनते थे कि यार Yeah, he had difference of opinion with the management, team management. अब ये टीम मैनेजमेंट भी तो इतना वाइडली यूज्ड वर्ड है और इतने इसके वाइड implications है इट कैन sure. रेंज फ्रॉम एवरीवन फ्रॉम विक्रम सोलंकी टू Yeah, आशीष नेहरा टू जस्ट मे बी द टॉप 4 guys in the team. Okay, but हम तो but जब the most funniest thing was at the day of retention, the media and the TV was showing that Hardik has been retained, and after 2 hours we get the news that he has moved to MI. So it was like very करेक्ट funny. हाँ तो वो थोड़ा सा आई थिंक इन्होंने एक टाइम गैप मतलब जो द ऑफिशियल डेडलाइन थोड़ी सी उसके हिसाब से उनके फेवर में थी and they just came out with this thing कि यार the paperwork wasn't completed and this and that but जो भी है so in a way I think GT realized you cannot hold on to a player if he Yeah. really doesn't want to play for you it's a very prominent thing in football कि यार yeah, अगर क्लब ने बोला है कि आपको खेलना है हमारे साथ तो आपको खेलना है ठीक है no matter where you want to go does not matter cricket still needs a bit more time because a player आज की डेट में भी बहुत बड़ी एंटिटी है yeah. And there's another story coming up on this. 2010 में रविंद्र जडेजा खेलना नहीं चाहते थे राजस्थान रॉयल्स से जो उन्होंने बोला था उनको उनके ऊपर 1 साल का बैन लगा था तो अब कैसे अलाउड हो गया अब क्यों अलाउड हो गया और आगे जाते वक्त क्या और भी प्लेयर्स हमें ये करते हुए दिखेंगे दैट्स अनदर बिग इशू. यार आई थिंक जडेजा के साथ में जो हुआ था इफ आई रिमेम्बर करेक्टली वाज ही डिड नॉट sign his retention contract with RR and he tried to basically get a fresh contract for himself with Fresh Mumbai Indians. contract, back and fresh contract with some other franchisee. Mumbai, So that was Mumbai Indians I think. Mumbai से CSK I guess. CSK आएगा. CSK था क्या? तो Yeah. जडेजा के साथ ये हुआ था. So RR मैनेजमेंट 1 साल बैन भी हुए थे जडेजा उसके लिए. हाँ करेक्ट हाँ 1 साल बैन भी हुए थे. And I remember the first ball he faced from Warney was a bouncer. I hope you guys remember a great bouncer that Warney bowled to. I think वो if I remember वो उस समय CSK से भी नहीं खेलते थे वो कोची टस्कर्स के लिए सेलेक्ट हुए थे. KTK और वो हाँ KTK के लिए होते और and the moment Warren came he bowled a bouncer to Jadeja just to welcome him.
because he has, high hopes from Jadeja. You used to call him a superstar of Indian cricket and all. Rockstar, yeah, yeah. He was the Rockstar. one who Yeah. coined the term rockstar, right? जी, तो अब डिस्कशन को थोड़ा दूर ले जाते हैं हार्दिक पांड्या से। बहुत लंबी बातचीत हमने हार्दिक पांड्या के ऊपर ही कर ली है। रिटेंशन रिटेंशन के ऊपर ले जाता है, रिटेंशन लिस्ट जो जीटी ने रिलीज की है। Hmm. जल्दी से मैं नाम ले लेता हूँ सारे प्लेयर्स के। अभिनव सदरंगानी, बी साई सुदर्शन, दर्शन नालकंडे, डेविड मिलर, जयंत यादव, जोशुआ लिटिल, केन विलियमसन, मैथ्यू वेड, मोहम्मद शामी, मोहित शर्मा, नूर अहमद, आर साई किशोर, राहुल तेवटिया, राशिद खान, शुभमन गिल, विजय शंकर और रिद्धिमान शाह। और क्लियर है अब तो, शुभमन गिल अनाउंस हो चुके हैं कप्तान। और रिलीज प्लेयर्स की मैं बात करूं तो यश दयाल, के एस भरत, शिवम मावी, उर्विल पटेल, प्रदीप सांगवान, ओडिन स्मिथ, अलजारी जोसफ, दासुन शनागा। तो कोई सरप्राइजिंग नाम वहां पे जरूर नहीं है, बट काफी सारे पेसर्स को रिलीज किया, तो उसके पीछे कुछ। Yeah, देखो अगर मैं ना if I actually look at the players that have been let go हम्म, amongst those released, the players who actually got some game time were Yash Dayal, Alzari Joseph, and Dasun Shanaka. जी, Uh, इन्हें मतलब यश दयाल मेरे ख्याल से got most of the game time as compared to all these three. या Uh, None of them made much of a mark. Yeah, the last two names, Alzari Joseph and Darshan Shanakar, are international players with good reputations. Darshan Shanaka's batting has hurt India so many times. You know, you would not, ट्रू, या you've seen him मे बी do it to मे बी एक India. इंजरी का भी कंसर्न था उनके ऊपर, तो शायद वो भी हो Correct, but सकता the problem was last time also these two guys did not bring their A game to IPL. मतलब the fact that Alzari Joseph, I was myself a part of that the fan box जहाँ पे बैठ के मैं पागल हो रहा था, यार ये बंदा छोटी पे छोटी क्यों डाले जा रहा है बॉलर ने, people are just pulling him everywhere. है। In I, a way I don't think GT is going to miss these guys. यार यश दयाल के साथ you will have some bit of sympathy because he came against Rinku Singh. दैट रिंकू सिंह ओवर, या Yes, but I don't think that's the reason. All the players who were a part of that setup, right? Ashish Nehra, Hardik Pandya, everyone knows that you can have a bad day. But it wasn't the case that Yash Dayal was like a standout guy. मेरी opinion में तो actually आप पूछो तो even a Joshua Little was used to be was a bit of a disappointment. He really didn't do justice justice. to the fact that he was always slotted into the team. He was expected to deliver, but he was always making those mistakes. But ठीक है, I think he's probably one of the luckier guys who didn't get dropped. या That left armor variety वाला जो अगर आप फिर क्वेश्चन करने लगते हो तो ठीक है, आपको समझ में आएगा यश दयाल वर्सेस जोशुआ लिटिल, यू विल प्रॉब्ली गो विद द जोशुआ लिटिल देयर. या तो जो रिलीज हुए हैं इसमें से यही लोग थे जिनको हु गॉट सम गेम टाइम. And सो आई एम नॉट maybe the सरप्राइज्ड. impact player rule allows Joshua Little and Noor करेक्ट. Ahmed to play. Yeah. करेक्ट. तो जो बाकी लोग हैं ओडियन स्मिथ एंड द अदर गाइज, यार इनके साथ तो खैर दे डिडंट इवन गेट मच ऑफ अ गेम टाइम properly. So probably even during the practice, GT didn't find these guys really even getting into the playing 11, even as a replacement for someone who's already part of the playing 11 or maybe the top 14-15 वाला. थोड़ा सरप्राइज मुझे, मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम लिस्ट देखी तो थोड़ा सा मुझे ये सरप्राइज लगा था, लाइक लेटिंग गो ऑफ के एस भरत और उर्विल पटेल Hmm. was one of the things I was thinking here. Whatever Ridhiman Shah gets injured, so you need keepers. But then I started thinking from the point of view कि possibly this is actually an opportunity to go for a proper keeper batsman who is an out and out hitter. Like I Maybe would really love to see a you Phil had Salt. Matthew Wade, right? We had Matthew Wade, yes, Yeah. but मैं बोलूँगा कि Matthew Wade again यार वही बनता है ना, Matthew Wade is one of the overseas guys. So अब the moment you have tried to replace Ridhiman Saha with a Matthew Wade, again another overseas place, it upsets the balance that you have otherwise. Hmm. तो वो एक प्रॉब्लम होती है. मैथ्यू वेड एज एन ओपनर फॉर एग्जांपल रियली हैवंट सीन हिम डू मच फॉर ऑस्ट्रेलिया आल्सो, मोर ऑफ अ Yeah. लोअर order player, lower middle order. I won't be surprised if GT actually tries to go for, let's say, a Phil Salt or a Finn Allen. Okay, Josh just to, English. uh, Josh English is he part of the auction this time? Matlab, has he put his name Yeah, in? yeah, yeah, yeah. He'll He be, is. he'll be the part. Okay, so I was looking at the list of release guys. तो Phil Salt या Finn Allen जैसे को देखता हूँ मैं, तो these are the guys who are actually going to give you that powerful start also. Yeah. Shubman Gill is not an out and out hitter.
So he's Right. definitely the guy who's going to build your innings, give you really good shots, and probably build the innings से थोड़ा better ही obviously वो. But he's not going to be the guy who's going to go berserk. A Phil Salt, for example, is one of those guys who can go berserk on his day. तो वाइल दीज इनके आने से थोड़ी सी टीम की बैलेंस वैसे हो जाती है, अगेन ओवरसीज वाला एक एंगल आ जाता है, तो हो सकता है इफ फिन एलन और फिल सॉल्ट प्लेज they can hit the ball well. That would mean someone like a Noor, for example, will have to sit out and an Indian bowler comes in like a Sai Kishore if you're, let's say, trading a left arm spinner for a left arm spinner बट again. आई डोंट थिंक यू विल रिक्वायर ट्रेडिंग बिकॉज 38 करोड़ का पर्स आपके पास है और सिर्फ 2 फॉरेन स्लॉट आपको लेना है, तो यू कैन गो फॉर द बिग गाइज, यू कैन गो फॉर समवन लाइक रचिन रविंद्र। वो ज्यादा टेम्पटिंग नहीं होगा कि बड़े नाम के पीछे जाएंगे, 38 करोड़ का पर्स है। यार अगर हम बड़े नाम के पीछे जाते तो जो जीटी की ओरिजिनल थॉट है वही डिसरप्ट हो जाती। सी इट्स अगेन लेकिन अंडर लेकिन जस्ट टू ऐड योर पर्सपेक्टिव, आपको क्या लगता है कि कौन से वो दो तीन प्लेयर्स हैं जो जीटी इस बार पीछे जाएगा बिल्कुल, बिकॉज That's मतलब what I'm saying, right? जैसे अब या जैसे सौरभ ने कहा ना कि go after रचिन रविंद्रन, okay? The fan in me says yeah, definitely go for it. But फिर आप रचिन रविंद्रन को लेके आते हो, let's say he replaces a Ridhiman Shah at the top. Who's your या wicket keeper? You'll have to anyways find a place for a Ridhiman Shah to fit into the order. And जैसे ही आप रिद्धिमान सागो के नीचे फिट करने की कोशिश करते हो, you're going to push out some of the other guys who have been performing well, like a David Miller. You'll have to push out a Rashid Khan or maybe a Noor Ahmed, मोहम्मद शमी, आपके पास में मोहित शर्मा, ये सारे वो नेम्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपके लिए। और इवन तो साई नो मैटर, सुदर्शन, साई सुदर्शन विल करेक्ट, विल साई सुदर्शन, डेफिनेटली, तो मैं साई इवन सुदर्शन इफ वन आई डाउन वांट, प्लेयर बहुत बढ़िया है। even if I want a Rachin Ravindran to be a part of the team, how does he fit into the overall scheme of things? That is why I'm saying कि अगर मुझे रिप्लेस करना है तो मैं कीपर फॉर कीपर रिप्लेस करने की कोशिश करूंगा, स्पेशली समवन हु इज अ फार फार बेटर बैटर देन अ रिद्धिमान साहा। तो वो एक जरूर, बिकॉज रिद्धिमान साहा ने अपनी तरफ से ही डिड ऑल ही कुड, बट एट टाइम्स वी वुड फील कि he was probably only one dimensional. Every time there was a need, he was just going trying to play the cross batted shots. It was a bit of a challenge. On good pitches he did put his head down and try to score, but ठीक है, थोड़ा सा एक कभी कभी आपको ये चीज हर्ट कर सकती है। लेट्स से इफ शुभमन गिल फॉल्स अर्ली, who do you have at the top of the order to give you that kind of a firepower? Finn Allen or a Phil Salt will probably do a good job there, and they are also wicket keepers. तो मैं rules and balance के साथ इस चीज को वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, and not just the 38 crores का person splurge it on the big guys, because the moment you start splurging it on big guys, you're going to invite another Hardik Pandya controversy next year, or maybe another ईशान किशान सिनारियो कि यार पैसे तो देती लेकिन बंदा रन नहीं बना रहा आपके लिए। टीम बनेगी यार, टीम स्टार्स को लेके नहीं बनती, टीम्स अच्छे प्लेयर्स एंड डेडिकेटेड करेक्ट, लोग को लेके बनती है। यस राइट। जी, तो काफी सारे मुद्दों पे हमने बात कर ली है ऑलरेडी। और अगर लास्ट में मैं जाते जाते पूछूं कि एक प्लेयर जो जीटी टारगेट करेगी, जो मुझे लगता है, तो शाहरुख खान है। आप लोअर डाउन द ऑर्डर इंडियन बैटर, आप वैसा नाम जो जीटी को चाहिए शायद कि इंडियन टीम में और मे ये बी इंडिया से शार्दुल लेना। ठाकुर आल्सो। या Yeah. यार शाहरुख खान, आई डोंट अगर थिंक दैट एक गाय इज इवॉल्व्ड जी, हिमसेल्फ एट ऑल। अगर उस आप बंदे एक ने नाम अपने, बताना चाहें, कोई भी एक नाम जो आपको लगता है कि इसके पीछे तो जीटी जरूर जाएगा। I would expect these guys to go after some good fast bowlers. So, matlab, again, it's an impact of Hardik Pandya. This thing, okay. If Yeah. अगर आपको जो team India ने किया, right? The moment you have an Hardik Pandya opting out, someone who gives you 7 to 10 overs possibly, and someone who can bat, आपने उसको हटा के क्या किया? आप लेके आए एक, आपने ड्रॉप किया शार्दुल ठाकुर को साथ साथ में, you brought in a सूर्य कुमार यादव, a lower order batsman, and then you brought in a मोहम्मद शमी, ठीक है, विद द ऑब्वियसली विदाउट द नॉलेज कि बंदा इतना ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस करेगा, बट आप एक प्रॉपर फास्ट बॉलर को लेके आए जो आपको 10 ओवर दे सकता है, और आप एक प्रॉपर बैट्समैन को लेके आए जो हार्दिक की जगह बैटिंग कर सकता है। With Hardik out of the picture, you will have to look at a similar scenario at GT also, assuming that the guys who played in the final last year, more or less everyone is able to hold on to their place. तो अब मैं देखता हूँ कि आई हैव अ केन विलियमसन, राइट? हार्दिक पांड्या पिछले 2 साल से जो रोल प्ले कर रहा है इज द गाय हु इज मार्शलिंग द ट्रूप्स, marshalling the batting order, and he scores the big shots when needed, but otherwise he's just keeping the batting order together, number 4 pe aake. Yeah. You can't find someone better than a Kane Williamson in that situation, okay? Experience की अपनी वैल्यू है, we realize that with Hardik Pandya, and we would love to have a Kane Williamson in that role. अगर आप, let's assume कि Kane Williamson is fulfilling that role of a number 4 batsman, or
जो उस in that kind of a batsman who's basically managing the entire batting order. Who do you find on the other side? नाउ बॉलिंग में मोहम्मद शमी है आपके पास में, आपके पास मोहित शर्मा है, ओके. You still need some sort of backup for a Mohammad Shami or a Mohit Sharma in terms of a good impactful fast bowler who can make good use of the first the power Yeah. play also, and who if needed he And can chip into and the you overs. you had someone like शिवम मावी, तो वो क्या रीजन है कि शायद महंगे थे तो सस्ते में मिल जाएंगे इस बार, एक वो भी एक रीजन होता है कभी कभी. या शिवम मावी के साथ मैं वही देखूंगा कि इफ द टीम मैनेजमेंट डिड नॉट फील लाइक persisting with him even in the last season, probably it I don't think he's there where the GT would want him. Maybe it's a case of injuries, maybe it's a case of a lot of things coming together. Yeah. Shivam Yes, Mavi, even Mohit Sharma played above him. कि मोहित शर्मा को खिलाया उन्होंने. correct, and Mohit Sharma did a fabulous job Very that nice. way. हाँ. तो देर इज नो रीजन वाई मतलब आप मोहित शर्मा पे और के साथ और परसिस्ट नहीं करोगे. आई कैन बी प्रूवन रॉन्ग, एवरीवन कैन बी प्रूवन रॉन्ग कि एक सीजन के बेसिस पे आप कैसे बोल लो, बट ठीक है, उन्होंने वैसा किया. मैं तो मतलब इफ यू आस्क मी आई वुड बी रियली इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर लेट्स से फॉर अ जॉश हेजलवुड. ओनली प्रॉब्लम इज जॉश हेजलवुड एंड अगेन आई एम सेइंग अ मोहम्मद शमी के लेवल का बॉलर, ओके. द प्रॉब्लम इज ही इज अ थ्री फॉर्मेट प्लेयर. दीज गाइज विल नॉट think before dropping an IPL tournament if there's a test match around. So ये एक challenge हमेशा इनके साथ रहता है. आपके पास लॉकी फर्गसन है who's back in the mix as because he's been released by his franchise. तो इस टाइप के नेम्स है. हर्षल पटेल भी है फॉर एग्जांपल. यार वही प्रॉब्लम है, हर्षल पटेल ने खुद की ROI जस्टिफाई नहीं करी व्हेन ही वाज विद RCB. तो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी वैसी है लुकिंग फॉर अ गुड फास्ट बॉलर. इफ यू you you आस्क, have you have सॉरी, someone like जोफ्रा आर्चर का भी नाम वहां पे, तो मुझे लगता है कि वो तो आप आरआर के लिए सिक्योर कर देना. जी कंटिन्यू. आप आई एम मोर देन हैप्पी अगर आप जोफ्रा आर्चर को ले जाना चाहते हो, बिकॉज उसके साथ आपको यू हैव टू कीप टू पीपल फॉर अ स्ट्रेचर आल्सो, एंड विदाउट एनी एश्योरेंस कि आपको वो बंदा कितने ओवर निकाल के देगा. तो The कितने मैच only खेलेगा. team where he performed was RR, so we have high hopes. चलो ठीक है. मुझे इस बार मतलब इफ यू वांट, जैसे अंकित आपने बोला ना कि शार्दुल ठाकुर, यार प्रॉब्लम इज कि ही हार्डली मेक्स, इफ ही इज नॉट इवन अ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, ही हार्डली मेक्स द कट एज अ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ हार्दिक पांड्या. He's been released by KKR. Whenever he's played for India, also you find that Shardul Thakur is the guy who's not really going to be giving you his full quota of overs. He Right. is probably getting the wickets because people are going after him rather than him actually getting those wickets for you. And But batting yeah, I maybe just mentioned it because जो भी pool बचा हुआ है उसके अंदर से I think he is one of the picks. He's one of the few picks that you might Yeah, have. there are many tempting names. I tell you, पैट कमिंस का भी नाम वहाँ पे है. तो बहुत हाँ. सारे ऐसे नाम है कि टीम्स correct. चाहेगी कि यार हमारी टीम में खेले, बट इतना ही रखते हैं इस वीडियो को. 15 मिनट का मैंने अभिनव भैया को बोला था, बट इट्स ऑलमोस्ट 35 मिनट्स. तो पता नहीं चल रहा बात करते करते, बट थैंक यू सो मच अभिनव भैया फॉर ज्वाइनिंग इन. Thank you, और भैया. Thank you so much for having me, guys. Thanks so much. Thank Always a you, good भैया. chat having talking to you Yeah. guys. Very nice. Yeah. जी, तो जीटी का आप सबको समझ में आ गया होगा. एज अ फैन इन्होंने बताया, हार्दिक पांड्या के ऊपर हमने बहुत सारी बात की, शुभमन गिल एज ए कैप्टन के ऊपर हमने बात की. तो ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक्स जीटी से रिलेटेड छूने की कोशिश की है इस वीडियो में. और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना, शेयर करना. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय हिंद. Thank you.